I, Chaman Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Baldwada, welcome you all for class 12th subject chemistry, unit 16th, and the topic is chemistry in everyday life. Dear students, today's subtopic is therapeutic action of different classes of drugs. Let us start our topic, therapeutic action of different classes of drugs. First है antacids. Overproduction of hydrochloric acid in stomach is known as acidity. Acidity causes irritation and pain in stomach. Earlier, sodium hydrogen carbonate is used to treat the acidity. Metal hydroxides are a better alternative for treating the acidity. Hyperacidity also causes ulcer in the stomach. Secretion of hydrochloric acid is promoted due to secretion of histamine. The drug cimetidine is used to suppress the release of histamine. This decreases the secretion of histamine. Antacids, a substance which neutralize the excess of hydrochloric acid and raise the pH to an appropriate level in the stomach are called antacids. The most commonly used antacids are weak bases such as sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, magnesium carbonate, magnesium trisilicate, aluminium hydroxide gel, and magnesium phosphate. Commonly used antacids are cimetidine, Tagamet, रेंटिडीन जिसको जेंटेक बोलते हैं, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड पेंटोम्प्राजोल. These are commonly used antacids. Antacids, acidic pH is necessary in the stomach for digestion of food and good health, but excessive acidity in the stomach cause discomfort, heartburn and gastric ulcer. The chemical substances which neutralize excess of acid in the gastric juices and raise the pH of the stomach to an appropriate level are called antacids. pH कम हो जाए यानी कि एसिडिटी पेट में बढ़ जाए तो हम उसको एसिडिटी कहते हैं, और एंटासिड्स क्या होते हैं, जो इस एसिडिटी के लेवल को ऊपर ले आए. तो मेडिसिन इस तरह से हमारे स्टोमक में एंटर करती है और एसिड स्टोमक कंटेंट यहाँ इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. फर्दर लेट अस मूव. Next is histamines. Histamine is a potent vasodilator. It has various functions. It contracts the smooth muscles in the bronchi and gut and relaxes other muscles. Histamine is also responsible for nasal congestion associated with common cold. In general, release of histamine in the body cause allergy. हिस्टामाइन ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, जब रिलीज होते हैं तो एलर्जी कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड हो जाती है हमें, और हमारे फेफड़ों में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और स्मूथ होते जाते हैं. हिस्टामाइन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो ड्रग्स हैं, दीज आर एंटी हिस्टामाइंस. The drugs which interfere with the natural action of histamine by competing with histamine for binding site of the receptor where histamine exerts its effect are called antihistamines.
These are widely used for treatment of common cold, conjunctivitis, itching of eyes, motion sickness, nausea in pregnancy and post operative vomiting. यहाँ पे ये एंटीहिस्टामाइंस यूज होते हैं. Some important antihistamine drugs are brompheniramine, Dimetap, टर्फिनाडीन, सैलिडेन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन जिसको हम बेनाड्रिल कहते हैं, फिनेरामाइन मेलेट जिसको हम एविल कहते हैं, सिट्रीजीन, क्लोरफिनेरामाइन जीट and promethazine etc. These are some promethazine etc. These are some important histamine drugs. Let us move further. This is brompheniramine. This drug is brompheniramine. आपको स्ट्रक्चर कंपल्सरी नहीं है, फिर भी हायर स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं. एंटीहिस्टामाइन में जो फर्स्ट ड्रग है हमारी ब्रोमफिनेरामाइन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमफिनेरामाइन, और इसको हम डाइमटैप के जो हमारा ट्रेड नेम है इसका उससे मार्केट में देखते हैं. नेक्स्ट है फिर हमारा टर्फिनाडीन. दिस मॉलिक्यूल इज टर्फिनाडाइन जिसको हम सैल्डेन भी कहते हैं. दिस इज अनदर एंटीहिस्टामाइन. फर्दर दिस कंपाउंड इज डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. ओके, दिस इज डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. It is a antihistamine. Further, it is also sold by the trade name Benadryl. Further, neurologically active drugs. Neurological active drugs are of two types. One is tranquilizers and second is analgesics. Okay, these analgesics are further of two types. One is non narcotics and second is narcotics. तो जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है, फर्स्ट दे आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स. एनाल्जिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स. नोराडर्नालिन. It is a neurotransmitter. It is a neurotransmitter that plays a role in mood changes. If the level of noradrenaline is low for some reasons, then the message transfer process becomes slow and the person suffer from depression. अगर ये कम हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है. In such cases, antidepressant drugs are used. Iproniazid and phenelgine are two important antidepressant drugs. This is iproniazid. This molecule is iproniazid and this molecule is phenelgine. Chlordiazepoxide and meprobamate are relatively mild tranquilizers. These two molecules are mild tranquilizers. Chlordiazepoxide and this is meprobamate. These are two molecules used as mild tranquilizers. Further, some other tranquilizers are Valium and serotonin. This is diazepam. This molecule is diazepam and known as Valium, and this is serotonin.
These two are also other tranquilizers. Further, this is Equanil. Equanil is used in controlling depression and hypertension. This molecule is widely used for controlling depression. Further, analgesics. Analgesics reduced or abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination, or paralysis or some other disturbances of nervous system. कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आए, इम्पेयरमेंट हो जाए, मेंटल कंफ्यूजन हो जाए तो हम एनाल्जेसिक्स इन ड्रग्स को लेते हैं जिनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं. दीज आर क्लासिफाइड एज नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स एंड नार्कोटिक जिनको हम एडिक्टिव भी बोल देते हैं. ये दो तरह के एनाल्जेसिक्स होते हैं हमारे. फर्स्ट है नॉन नार्कोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स जिनकी हमें आदत नहीं पड़ती है. Aspirin and paracetamol belongs to the class of non-narcotic analgesics. This is the definition of analgesics. These inhibits the synthesis of prostaglandins which stimulate inflammation in tissues and cause pain. Okay, हमारे टिश्यूज में जो दर्द हमें होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण होती है, जिसे इन्फ्लेमेशन होती है वही पेन होती है. These drugs are effective in relieving skeletal pain such that is due to arthritis. और हमें अर्थराइटिस की वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है उसको भी ये दूर करते हैं कुछ हद तक. These drugs are also reduce fever. These are also antipyretic, that is they reduce fever and prevents platelet coagulation. और खून के थक्के के जमने को भी ये रोकते हैं. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स. दिस इज पैरासीटामोल. This is analgesic, first molecule, and second molecule is aspirin. It is also used for pain relieving effect. Further, narcotic analgesics. Okay, morphine and many of its homologs when administered in medicinal doses relieve pain and produce sleep. Morphine एक नार्कोटिक ड्रग है जो अगर हमारी बॉडी में चले जाए तो कम मात्रा में मेडिसिनल डोज के रूप में तो हमारे शरीर में दर्द कम हो जाता है और नींद आने लगती है. These produce stupor, coma, convulsions and ultimately death. हमें चक्कर और हम अचेत भी हो सकते हैं, शुद्ध बुद्ध खो सकते हैं और हमारी इन ड्रग्स को अगर ज्यादा में मात्रा में लें तो डेथ भी हो सकती है. मॉर्फिन नार्कोटिक्स आर रेफर्ड टू ओपिएट्स सिंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी. ये ओपियम से हमें मिलते हैं इसलिए हमें इनको ओपिएट्स भी कहते हैं. These drugs chiefly used for the relief of post-operative pain of terminal cancer in childbirth and in childbirth. So they are very good analgesics, hence used for post-operative pain. अगर कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद जो दर्द होती है इससे ये छुटकारा देते हैं और चाइल्ड बर्थ के समय भी जो बहुत ज्यादा दर्द होता है उससे भी ये छुटकारा दे देते हैं. तो दीज आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स which is known as morphine. This is the second molecule. This is the second molecule and it is known as heroin. And this is third molecule of analgesics
it is known as codeine. These three molecules are narcotic analgesics and are found in opium poppy. Further, antimicrobials. An antimicrobial tends to destroy or prevent development or inhibit the pathogenic action of microbes such as bacteria, fungi, virus or other parasites. एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि माइक्रोब छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उनको ये रोकते हैं, या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रोकते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और अदर दूसरे परजीवी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, इनके लिए हमारे पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं। फर्दर फंजाई, तो इनके लिए हमें एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं। वायरस, तो इनके लिए हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। और पैरासाइट, इनके लिए हमारे पास एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होते हैं। तो दीज आर एंटी माइक्रोबियल्स. Antimicrobials are further divided into two categories. First is antibiotics and second is antiseptics and disinfectants. Okay. Antibiotics are used as drugs to treat infections because of their low toxicity for humans and एनिमल्स. एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी लो टॉक्सिसिटी है, वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं और इनको हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन ऑर्गेन्स के ऊपर यूज कर सकते हैं. An antibiotic now refer to a substance produced wholly or partly by chemical synthesis which is in low concentration, inhibit the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process. वो उनके metabolic process को intervene करके उनको उनकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं, inhibit कर देते हैं. Antibiotics, this is the first antibiotic. Its name is salvarsan, also named as arsphenamine. It is discovered in 1907 in Paul Ehrlich's lab by Alfred Wertham. This is salvarsan antibiotic. Second is prontosil. This molecule is prontosil. Its group is sulfonamide. This is known as sulfonamide group. This prontosil antibiotic is known as sulfonamide. Synthesized by Bayer chemist Joseph Clarel and Fritz Metz. So this antibiotic is prontosil. Further, this is another molecule. It is sulfanilamide. This molecule is sulfanilamide. Okay, the real active compound aniline derivative with the sulfonamide group. This is a real active compound. It is very widely used as antibiotic. Sulfanilamide. Next antibiotic is sulfapyridine. Sulfapyridine is a sulfa medicine. It is used to help control dermatitis, herpetiformis during disease, a skin problem. Sulfapyridine is a sulfa medicine. It is used to control dermatitis, यानी कि स्किन प्रॉब्लम में ये एंटीबायोटिक काम आता है, जैसे खारिश वगैरह. नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज अजोडाई. दिस अजोडाई इज आल्सो यूज्ड एज एंटीबायोटिक. नाउअडेज इट इज यूज्ड ए डाई. नेक्स्ट इज penicillin. This is a very commonly and widely used antibiotic in recent times. It is bactericidal, discovered in 1929 by Alexander Fleming. बैक्टीरिया को मारने के ये काम आता था. This is bactericidal. Next antibiotic is chloramphenicol. This molecule is chloramphenicol,
rapidly observed from the gastrointestinal tract and hence can be given orally in case of typhoid, dysentery, acute fever, and in certain form of urinary infections and pneumonia. These are some diseases where chloramphenicol antibiotic is used. Further antibiotic is aminoglycosides. This antibiotic is aminoglycosides. It is also a bactericidal. Okay, this is aminoglycoside structure. Further, the other antibiotic is ofloxacin. This is ofloxacin. It is also a bactericidal. ये बैक्टीरिया को मारने के काम आता है. नेक्स्ट, दिस मॉलिक्यूल इज एरिथ्रोमाइसिन. गले में जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये एंटीबायोटिक काम आता है. एरिथ्रोमाइसिन, इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक मॉलिक्यूल. Next antibiotic is tetracycline. This structure is of tetracycline. It is also antibiotic and bacteriostatic. Bacteria को रोक देता है ये. This is another structure of tetracycline. Further, antiseptics and disinfectants. Antiseptics and disinfectants are also chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms. Okay, first, antiseptic. Antiseptics are applied to the living tissues such as wounds, cuts, ulcer, and diseased skin surfaces. Okay, this is furacin antiseptic. This chemical, this compound is furacin, an antiseptic, and this chemical is soframycin. It is also another antiseptic used. Next antiseptic is chloroxylenol. This antiseptic is chloroxylenol, and this chemical is terpineol. This chemical is terpineol, and this chemical is bithionol. So these are also other antiseptics used. Disinfectants. Disinfectants are applied to inanimate objects such as floors, drainage systems, instruments, etc. Some substances can act as antiseptic as well as disinfectants by varying the concentration. सिंपल सी बात है कि एंटीसेप्टिक्स ह्यूमन ऑर्गेन्स के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे फ्लोर्स, ड्रेनेज, इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. ओके, और कुछ जो है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एंटीसेप्टिक while 1% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज डिसइंफेक्टेंट. 0.2 to 0.4 ppm chlorine in aqueous solution is disinfectant. Also low concentration of sulfur dioxide is also disinfectant. Next, anti-fertility drugs. To control the population and the concept of family planning lead us to develop anti-fertility drugs. बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए इन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं. Hence, anti-fertility drugs are the drugs which control the birth. These are the synthetic estrogen and progesterone derivative. Common examples of anti-fertility drugs are norethindrone, a synthetic progesterone, and ethinilestradiol, which is also known as novestrol. It is estrogen derivative. It is used in combination with
progesterone derivative. So this is anti-fertility drugs. This is norethindrone, an anti-fertility drug. This is ethinylestradiol. This is ethinylestradiol. Novestrol, it is also an anti-fertility drug. Okay. Dear students, I have completed the topic assigned to me, because the topics further this topic are deleted from the syllabus for this year. So let us move to the syllabus reduction PDF. This is physical education. Let us move towards chemistry. Okay, +2 mathematics. This is +1 mathematics, +2 biology. Okay, this is +2 chemistry, and this topic is 16th. You can see here chemistry in everyday life. The deleted topics are chemical in food and cleansing agent. Okay, so the next topic, that is chemical in foods and cleansing agents, are deleted from the syllabus for this year. Hence, by completing this lecture, we have completed the whole syllabus for this year. Hence, I am very thankful to all of you. I offer my heartiest gratitude to Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur ji, Education Minister of Himachal Pradesh, Shri Govind Singh ji, Director of Education, Project Director of RMSA, SSA, whole SRG, especially Shrimati Anima ma'am, who provided me this great opportunity in this pandemic era to educate the student of Himachal Pradesh. Jai Hind. Thank you.